A light sensitive device that converts drawing, printing, text or other images into digital form is option number A है keyboard, option number B platter, option number C scanner, option number D OMR, option number E है none of these. The correct option है option number C scanner. Which protocol provides the email facility among a different hosts? FTP, SMTP, TELNET, SNMP. ये ऑप्शन नंबर ई है none of these. The correct option है B SMTP. The basic architecture of a computer was developed by option number A Johann von Neumann, option number B Charles Babbage, option number C Blaise Pascal, option number D है Gordon Moore, option number E है none of these. The correct option है option number A Johann von Neumann. Question number 4 है in order to tell Excel that we are entering a formula in cell, we must begin with an operator such as $, add, plus, equal या हैश. तो एक्सेल में तमाम फार्मूले इक्वल के साइन से स्टार्ट होते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. In how many generations a computer can be classified? Option number A है 3, B 4, option number C है 5, option number D है 6, option number A है none of these. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C 5 जनरेशन में कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया जा चुका है. क्वेश्चन नंबर 6 है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी है प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस, सी है सिस्टम नॉलेज, डी है VVLSI, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दिस. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फर्स्ट जनरेशन of computer was based on which technology? ट्रांजिस्टर, LSI, VLSI, वैक्यूम ट्यूब या नन ऑफ दी. करेक्ट ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब. क्वेश्चन नंबर 8 है माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर ए है सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी है फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है थर्ड जनरेशन, ये ऑप्शन नंबर ई है ऑल ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फोर्थ जनरेशन. क्वेश्चन नंबर 9 है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, LSI, VLSI या नन ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर्स. यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर की बुनियाद पर बनाया गया था. Which of the following memory is non-volatile? SRAM, DRAM, ROM, all of above या none of these. तो correct option है C ROM. GUI stands for Graphic User Interface, Graphical Universal Interface, Graphical User Interface, Graphical Unique Interface या none of these. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. क्वेश्चन नंबर 12 है एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन entered into the memory of a computer is considered as. ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी इनपुट, ऑप्शन नंबर डी है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन है इनपुट.
Question number 13. Time duration which a job is processed by the computer is execution time, delay time, real time, waiting time, या none of these. तो correct option है execution time. Which of the following circuits is used as a memory device in computer? Rectifier, flip-flop, comparator, attenuator. None of these. The correct option है option number B, flip-flop. The memory size in a mainframe computer and advanced The memory sizes in mainframe computers and advanced technology microcomputers are expressed as bytes, kilobytes, bits, megabytes. ये none of these. तो correct option है megabytes. Which of the following is not an application software package? Red Hat Linux, Microsoft Office, Adobe PageMaker, Open Office. या none of these. तो correct option है option number A, Red Hat Linux. Question number 17. Which of the following statement is wrong? Option number A, Photoshop is a graphical design tool by Adobe. Linux is free and open source software. Option number C है Linux is owned and sold by Microsoft. Option number है D, Windows XP is an operating system. Option number E है none of these. Correct option है option number C, Linux is owned and sold by Microsoft. Question number 18 है an error is also known as bug, debug, cursor, icon. या none of these. The correct option number A, bug. Microsoft Word is an example of an operating system, processing device, application software, and input device, system software. The correct option number C, application software. Who invented the supercomputer? Seymour Cray, J.H. Vaughan, Tassell. Option number C है चार्ल्स गिंसबर्ग. ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स बाबेज. या ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, सेमोर करे. क्वेश्चन नंबर 21 है ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर, etc. टास्क बार, विंडोज, आइकन्स, डेस्कटॉप. या नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आइकन्स. Which of the following is not an advantage of magnetic disk storage? The access time of magnetic disk is much less than that of magnetic tip. Disk storage is less expensive than tap storage. Disk storage is longer lasting than magnetic tap. ये ऑप्शन नंबर डी है none of these. तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका none of these. The 0 and 1 in the binary numbering system are called binary digits or bytes, kilobytes, decimal bytes, bits. या none of these. तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, bits. The size of commonly used floppy disk is 4.5
3.5, 3.25, 3.5.5, या none of the. The correct option है option number B 3.5. The IC chip used in a computer is made of. Option number A है chromium, option number B iron oxide, option number C है silica, option number D है silicon, option number E है none of these. The correct option है option number D silicon. Which of the following operating system is produced by IBM? Option number A OS2, option number B है Windows, option number C है DOS, या ऑप्शन नंबर डी है यूनिक्स. तो ऑप्शन नंबर ए है OS2. The processor which performs arithmetical and logical operation is called control. ऑप्शन नंबर बी है ALU, ऑप्शन नंबर सी है रजिस्टर, या ऑप्शन नंबर डी है काशी मेमोरी. तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी ALU. Which was an early mainframe computer? Unique, Frontier, Brainiac या ENIAC. तो ऑप्शन नंबर है DENIAC. Where is the headquarters of Intel located? Redmond, Washington, Tucson, Arizona, Santa Clara, California, या Richmond, Virginia. तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया. Which of the following was the first Intel processor introduced? 3080, 4004, 8080 या 8086. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 4004. Question number 31 है Windows settings are recorded in Windows INI, win.ini, system.ini या group.ini. तो करेक्ट ऑप्शन है win.ini. Which network protocol is used to send emails? FTP, SSH, POP3, SMTP या none of the. correct option है ऑप्शन नंबर डी SMTP. ये नेटवर्क प्रोटोकॉल ऐसा है जो कि ईमेल सेंड के लिए इस्तेमाल होता है. When was the first email sent? 1963, 1969, 1971 या 1974. The correct option है ऑप्शन नंबर सी 1971. Question number 34 है operating system is the most common type of software. Communication software, application software, system software या ऑप्शन नंबर डी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर 35 है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट 1 परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन टू स्टोर डाटा, परफॉर्म कंपैरिजन, या 4 है communicate with input devices from above. The correct one is 1 only, 2 only, 1 and 2 only या 1 and 3 only. तो correct option है 1 and 3 only. RAM chips. Option number A है allow the computer to store data electronically. B है store data indefinitely unless you delete it. ऑप्शन नंबर सी है और सेकेंडरी मेमोरी, या ऑप्शन नंबर है डी ऑल ऑफ दी अबव. तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली.
Supercomputers are mainly useful for mathematical intensive scientific application. Option number बी है डाटा रिट्रीव ऑपरेशंस, या ऑप्शन नंबर सी है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, या ऑप्शन नंबर सी है इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैथमेटिकल इंटेंसिव scientific applications is the correct option. The operating system manages memory, processor, disk and I/O devices. All of the above. तो correct option है option number D. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये तमाम ऑप्शंस को ही मैनेज कर रहा होता है. Which memory is not volatile and may be written only once? ऑप्शन नंबर ए है रैम, ऑप्शन नंबर बी है EEPROM, ऑप्शन नंबर सी है EPROM, या ऑप्शन नंबर डी है PROM. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी PROM. The memory which is programmed at the time it is manufactured is RAM, ROM, PROM, EPROM, या none of these. तो करेक्ट ऑप्शन है ROM. अब क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल? रैम, रोम, EPROM, PROM. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रैम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट? ऑप्शन नंबर ए CPU, बी है मैग्नेटिक टैप्स एंड डिस्क, सी है वीडियो टर्मिनल, ऑप्शन नंबर डी है सेंसर मैकेनिकल कंट्रोलर्स. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए CPU. क्वेश्चन नंबर 43 है a kilobyte also referred to as KB is equal to 1000 bytes, 1024 bytes, 2048 bytes, 512 bytes. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1024 bytes. Which is the device that convert computer output into a form that can be transmitted over a telephone line? ऑप्शन नंबर ए है टेलीपोर्ट, बी है मल्टीप्लेक्सर, सी है कंसंट्रेटर, या डी ऑप्शन है मॉडम. तो करेक्ट ऑप्शन है डी मॉडम. Which of the following items is not used in LAN? ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर, बी है मॉडम, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटर, और ऑप्शन नंबर डी है केबल्स. तो करेक्ट ऑप्शन होगा मॉडम. अब क्वेश्चन नंबर 46 है रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड. ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर, ऑप्शन नंबर बी है OS वर्जन, ऑप्शन नंबर सी है कर्नल, ऑप्शन नंबर डी है बूट स्ट्रैप लोडर, या ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बूट्स ट्रैप लोडर. कंप्यूटर वायरस इज अ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया, या फ्रीवेयर. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर. EEPROM stands for electronically erasable programmable read only memory. ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रिकली इनेबल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रिकली इनेबल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी is the abbreviation of EEPROM.
The most advanced form of ROM is ऑप्शन नंबर ए है PROM, B है RAM, C ऑप्शन नंबर है EEPROM, ऑप्शन नंबर डी है काशी मेमोरी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी EEPROM। क्वेश्चन नंबर 50 है another term for main memory is ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी है रोम, ऑप्शन नंबर सी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर डी है रैम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी रैम। The file extension of MS Word document in Office 2007 is करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है .doc, ऑप्शन नंबर बी है .docx, ऑप्शन नंबर डी सी है .pdf, ऑप्शन नंबर डी है .txt और ऑप्शन नंबर ई है .exlx। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी .docx। A computer port is used to ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेट विद हार्ड डिस्क, बी है डाउनलोड फाइल्स, सी है कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। क्वेश्चन नंबर 53 है 1 MB इज इक्वल टू 1024 bytes, 1024 KB, 1000 KB या 1000 GB। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1024 किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर है 54 डॉट मैट्रिक्स डेस्क जेट इंकजेट एंड लेजर are all types of which computer peripherals? ऑप्शन नंबर ए है प्रिंटर्स, ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटर्स या ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर्स। क्वेश्चन नंबर 55 है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर सी है IP एड्रेस या ऑप्शन नंबर डी है कंपाइलर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 56 है AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मैक्रोमीडिया, अडोब। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है डैश इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी है काशी और ऑप्शन नंबर डी है बायोस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी काशी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 58 है इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल अ क्लाइंट प्रोग्राम डैश आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स, सी है सर्विस सॉफ्टवेयर फाइल्स टू अदर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है डिस्ट्रीब्यूट डाटा फाइल्स टू ऑल अदर कंप्यूटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 59 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और डी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। ए है सेमीकंडक्टर मेमोरी, बी है मैग्नेटिक डिस्क, सी है मैग्नेटिक ड्रम्स और ई है डी ऑप्शन है मैग्नेटिक टैब्स।
तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सेमीकंडक्टर मेमोरी। General purpose computers are those that can be adapted to countless uses simply by changing its output device, input device, program, processor या none of these। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम। A collection of 8 bits is called byte, record, word या nibble। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बाइट। A typical modern computer uses ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक कोर्स फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, बी ऑप्शन है LSI चिप्स, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नेटिक टैप्स फॉर प्राइमरी मेमोरी और ऑप्शन नंबर डी है मोर देन 10,000 वैक्यूम ट्यूब्स या ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी LSI चिप्स। Question number 64 है the term memory applies to which one of the following logic, storage, input device, output device या none of these। तो correct option B है storage। The device primarily used to provide hard copy is the option number A CRT, ऑप्शन बी है कंप्यूटर कंसोल, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटर, ऑप्शन डी है कार्ड रीडर या ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रिंटर। Which of the following is the most powerful type of the computer? Mainframe, superconductor, microcomputer, supercomputer या ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सुपरकंप्यूटर। Which of the following is true about primary storage? It is a part of the CPU. B है it allows very fast access to data. It is relatively more expensive. ऑप्शन डी है all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी all of the above। A list of instruction used by a computer is called text, CPU, program, output। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी program। The process of copying data from a memory location is called writing, controlling, booting या reading। तो करेक्ट ऑप्शन है डी reading। The process of computing data into a storage location is called reading, writing, controlling, hand shaking। तो करेक्ट ऑप्शन बी है writing। Which of the following is the product of data processing? Information, data, software program या सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन।